Now children, we have cleared the concept of chemical change, chemical reaction, reactants and products. Okay, now we will study about chemical equations. So, what are chemical equations? It is the brief representation of a chemical reaction. Okay, with the help of symbols and formulae of reactants and products is called chemical equation. You know children, first of all, you should know what are symbols and what are formulae. Symbols means, for example, hydrogen. Hydrogen is only made of one atom. So that is symbol. And oxygen, O, nitrogen, N, hydrogen, H, sulfur, S. All these are called symbols. Okay. And what are formulae? Formulae. One formula, that is singular. For example, combination of two or more symbols. For example, calcium carbonate, CaCO3. Okay, here how many substances or symbols are there? CaCO3, Ca one, C second, and O third. It means there are three symbols are there. Okay, calcium carbonate, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur, silver, etc. These are symbols. Okay, and what are formulae? CaCO3. Here, calcium, carbon, oxygen. Combination of two or more symbols. That is formula. Formula. Because it is one compound. Okay, that is formula. If there are so many compounds, then we can say formulae. E. Okay. So, these are in elemental form. Okay, they are called elements and those are called compounds. Now, come to the chemical equation. What is chemical equation? I have told you it is the symbolic representation of chemical reaction. Okay. So, what do you mean by symbolic representation? With the help of symbols or formulae, a chemical reaction that is represented by symbols or formulae, you can also say. So, that is called chemical equation. Okay. Now, it is written in language. We are taking one example and it is written in language. First of all, we will clear here when carbon dioxide gas is passed through freshly prepared lime water. Lime water turns milky due to the formation of calcium carbonate. This reaction can be written as, okay, it is also written in the form of language or words. Okay, carbon dioxide gas plus sign is here, means when reacts with lime water, you know very well what is lime water. Okay, lime water, it will go, both the reactants will give
products, two or more products, that is called calcium carbonate and water. By combining or reacting carbon dioxide and lime water, it will give product, that is calcium carbonate and water. Okay. Now, the chemical reaction between carbon dioxide and lime water can be written in the form of chemical equation. Now, how we will write chemical reaction in the form of chemical equation? We will see CO2. What is the formula of carbon dioxide? Yes, it is CO2. And what is the formula of chemical formula of lime water? It is CaOH whole twice. And what is the chemical formula of calcium carbonate? CaCO3. And what is the chemical formula of water? H2O. So it is the short representation of chemical reaction with the help of symbols and formulae. That is called chemical equation. So it is in the form of chemistry. Okay. So here chemicals are there. That's why it is chemical reactions or equations. Dear children, here some confusions are there. What is that confusion? Yes, come. This is what? A chemical reaction in which two parts are there. One is reactant and another is product. Here we can identify very easily if single compound is there, or you can say product is there. Okay. Remember that these are what? Reactants. By combining or reacting these two reactants, a new thing is formed, that is called product. Here we will identify the product very easily because it is single. But how can we identify in this reaction the product? Because in both the sides, both the formulae or compounds are same in number. One is there CO2, one is OH whole twice. As in this side also two substances are formed. If both the substances on both the sides are same, then what will be the product? It will confuse me. Then how we can identify it? Simply, I will tell you a trick. Okay? Just wait. First of all, we will write these according to rule. These are reactants. Okay? And these should be products. But confusion is this. In both the sides, two substances are there.
here also and here also. On both the sides there are two substances, and which one is product and which one is reactant? We get confused. To clear your confusion, I am giving you a simple trick. Okay, see, you know this is what? Arrow. And here also arrow. And everything is hidden in this arrow. Okay, if this head of, okay, if head of this arrow is towards like this, forward direction, that will be definitely product. Okay, because you see here this arrow head towards this substance, so it is confirmed that this is product. This head is also facing towards these substances, so it is clear that these are products. Okay, whenever the situation you face just like this, when the substances on both the sides are written same, you simply see the head of this arrow. If moving towards like this, not like this, like only this, then these substances will be products. Understood? Okay. Next topic is very, very important. Now children, see here, rust and rusting. What is the difference between rust and rusting? First of all, we will know about rust and what is rust and how it is formed. Okay. Rust is a brownish layer or film formed on the iron metal in the exposure of water, vapors and oxygen. It is corrosive in nature, which cause destruction of metals. Okay. We will take an iron rod. Okay. If we keep this iron rod in exposed area, okay, in the presence of water or moisture and oxygen, it will caught by rust. Okay, that what is rust? Rust is a brownish layer formed on the iron object or iron material. So this rust is very, very corrosive in nature. Corrosive means destructive in nature, which cause damage to the objects. What type of objects? Iron objects. Okay. So this rust is harmful for iron materials. So what is rust? Again I am telling you, the formation of, for example, this is iron metal. If we keep this iron metal in water, okay, in the open atmosphere, in rainy days,
especially in rainy days, this metal will deposit a layer around it, a brownish layer. That brownish layer caused in the presence of moisture and oxygen. Okay, that brownish layer around the metallic surface is called rust. ठीक है, समझ में आया? रस्ट, रस्ट यानी कि जंग। अगर हमने आयरन से बने जितने मटेरियल्स हैं या यूटेंसिल्स हैं, अगर हमने कहीं पानी में छोड़ दिए और पानी के साथ में उसको एटमॉस्फेयर से, एयर से ऑक्सीजन मिल गई, दोनों रिएक्ट करके पानी, आयरन मेटल और क्या, वाटर वेपर, सॉरी ऑक्सीजन, कौन कौन रिएक्ट करेगा आयरन के साथ में? वाटर वेपर, ऑक्सीजन और वो खुद मेटल, मेटल पे अटैक कर देंगे। ये दोनों ही रिएक्ट करके कौन? रस्ट। ठीक, तो वो ब्राउनिश सी लेयर एक मेटल के चारों तरफ फॉर्म हो जाएगी। लोहे के बर्तनों में हमने देखा होगा जंग लग जाती है, तो उस जंग को ही क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। ठीक, और रस्ट दैट इज वेरी मच कोरोसिव इन नेचर। और कोरोसिव का मतलब होता है वो बहुत नुकसान पहुंचाती है। जब ब्राउनिश लेयर फॉर्म हो जाती है, वो धीरे 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 मेटल्स को क्या करती है? खराब कर देती है, नुकसान पहुंचाती है और उसको धीरे धीरे खराब कर देती है और तोड़ देती है। ठीक है, नष्ट कर देती है। अब रस्टिंग, अब रस्ट तो समझ में आ गया कि हमें एक ब्राउन सी कोई चीज मिल गई जो उस मेटल पे अटैक कर दिया। कौन से मेटल पे? आयरन के मेटल पे अटैक कर देता है। किसकी प्रेजेंस में? मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में। ठीक है, जब तक मॉइस्चर और एयर या ऑक्सीजन नहीं होगी तब तक रस्ट फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। तो रस्ट फॉर्मेशन हो गई यानी कि येलो सी लेयर बन गई आयरन मेटल के चारों तरफ, जो बहुत नुकसानदायक है। ठीक है, अब ये रस्टिंग क्या होता है? रस्ट तो समझ में आ गया, येलोइश कलर की एक फिल्म कोटिंग या लेयर होती है। ठीक, जो बहुत कॉरोसिव नेचर की होती है, मेटल्स के लिए नुकसानदायक होती है। ठीक, उनको खराब कर देती है। लेकिन व्हाट इज रस्टिंग? अब रस्टिंग होता है एक प्रोसेस। ठीक, देखो, द प्रोसेस बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड ऑन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रस्टिंग। अब रस्टिंग एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो मेटल्स के चारों तरफ वाटर वेपर्स या मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फॉर्म हो जाती है। बात वही है, क्या हमने रस्ट वर्ड से ही रस्टिंग वर्ड बना, लेकिन अंतर बहुत है। रस्ट क्या है? येलोइश कलर की लेयर, और जो रस्टिंग है एक प्रोसेस है, वो येलोइश कलर की लेयर फॉर्मेशन होने की। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ formation of rust around the metals on the metals surface, that is called rusting. ठीक, वो रस्ट फॉर्मेशन की प्रक्रिया को रस्टिंग बोलते हैं। और येलोइश लेयर की जो एक फिल्म फॉर्म हो गई उसको बोलते हैं रस्ट। समझ में आ गया? ओके, नाउ फॉर रस्टिंग the presence of moisture and oxygen are required। यानी कि रस्ट फॉर्मेशन के लिए या रस्टिंग के लिए, ठीक है, क्या जरूरी है? मॉइस्चर, वाटर या ऑक्सीजन जो हमें एयर से मिलती है। अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं तो रस्ट फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। नाउ अब देखो, इस रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इस रस्टिंग फॉर्मेशन का क्या होता है? एक इक्वेशन भी होता है, केमिकल इक्वेशन। अभी हमने आपको पढ़ाया था केमिकल इक्वेशन।
ठीक है, क्या होते हैं। अब इसका एक केमिकल इक्वेशन भी होता है, यानी कि ये इसमें कौन कौन से केमिकल्स रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, ये चीज देखो। आयरन, व्हेन आयरन, आयरन का सिंबल है Fe, एंड ऑक्सीजन का आपको पता है O2, ठीक, एंड वाटर का आपको पता ही है H2O। अब जब ये हमें तीनों चीजें मिल जाती हैं, तीनों चीजें रिएक्ट करती हैं, इधर वाला पार्ट क्या होता है, रिएक्टेंट, और जिधर एरो लगा होता है उस वाला पार्ट किधर होता है, प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट में हमें इतनी चीजें जरूरी होंगी तभी रस्ट फॉर्मेशन होगी। एक तो आयरन का मेटल, ठीक है, आयरन जो Fe इसका सिंबल है, और ऑक्सीजन O2, और वाटर या मॉइस्चर H2O। When all these three chemicals or substances reacts with each other, they will form a new substance that is called iron oxide। और इसका केमिकल, अब इसको सिंबल नहीं बोलेंगे, क्यों, ये सिंबल से मिलके बना है Fe2O3, ठीक, दो चीजों से मिलके बना है, तो इसको फॉर्मूला बोलेंगे। ओके, अब देखो, ये आयरन, ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक नई चीज बना देते हैं, आयरन ऑक्साइड। और ये आयरन ऑक्साइड ही क्या है, ये रस्ट है। ओके, दिस आयरन ऑक्साइड इज कॉल्ड रस्ट। हो गई रस्टिंग, ठीक है, अच्छे समझ में आ गया। ओके, अभी आते हैं बच्चों, अगर रस्ट लग गई है, ठीक है, और नुकसानदायक भी है, तो हमको उससे बचने के उपाय भी आने चाहिए, ठीक है। तो रस्ट से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, देखते हैं। मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, कौन से तरीके हैं जो रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। नंबर 1, इफ आयरन मेटल्स आर नॉट अलाउड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर, वाटर एंड ऑक्सीजन और एयर, यानी कि वो जो आयरन के मेटल्स हैं उनको मॉइस्चर के, एयर के कांटेक्ट में आने ही मत दो। तो हमें क्या करना चाहिए, उनको मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट से आयरन के मेटल्स को दूर रखना चाहिए, तो वो रस्टिंग से बच जाएंगे। दूसरा तरीका है, वी कैन अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। आपने देखा होगा कि हम लोग जो लोहे के गेट लगाते हैं बड़े बड़े से, तो उस पर क्या लगा देते हैं, पेंटिंग वगैरह कर देते हैं, ठीक है। और कभी कभी हमारे ताले में जंग लग जाती है, रस्ट लग जाती है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रीस डाल देते हैं या ऑयलिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब तरीके हैं रस्ट से बचने के लिए। तो इसमें वी कैन अप्लाई कोट ऑफ पेंट और ग्रीस, ये दूसरा तरीका है बचने के लिए, ठीक है। हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, या तो ग्रीस लगा दो या ऑयलिंग कर दो उसमें। नेक्स्ट तरीका है, डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल सच एज क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। जितने भी आयरन के सामान हैं उनके ऊपर एक क्या लेयर चढ़ा दोगे, क्रोमियम की या जिंक की लेयर हम चढ़ा देंगे उस पर, जिसकी वजह से रस्ट नहीं लग पाएगी। अब ये 3 तरीके हैं, इनमें से आप कोई भी अप्लाई करके क्या रस्टिंग से प्रिवेंट हुआ जा सकता है, उससे के नुकसान से बचा जा सकता है, ठीक है। अब देखो, एक और नया टर्म हमको यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक। तो व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, ये होता क्या है गैल्वेनाइजेशन, इसको भी
वेरी सिंपल। अब देखो, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। यानी कि वो तरीका जिससे हम आयरन की मेटल पे कोटिंग करते हैं, और कौन से मटेरियल की कोटिंग करते हैं? जिंक। जिंक मेटल की एक कोटिंग कर देते हैं आयरन के मेटल्स के ऊपर, ठीक, उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। एग्जाम्पल है आयरन पाइप्स। बड़े बड़े हमने क्या है गटर में, और वैसे हम लोग के जो पाइप्स पड़े होते हैं, सीवरेज पूरा सिस्टम होता है, वो सब लोहे के पाइप्स होते हैं, वाटर के होते हैं, और उनको हमें आयरन या रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है? कोटिंग कर देते हैं एक जिंक की।